Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Farhan Ali Jamali and welcome to another episode of From the Top Inspiring Conversation. I'm very pleased to have Hasan Daudpota with me as a guest. Hasan is the CEO of Keys Production, which is Pakistan's leading production and event management company. Hasan, thank you so much for being with us. Pleasure having you. Hasan, सबसे पहले तो I just want to thank you because when I started this podcast, I had few CEOs in my mind or leaders in my mind, and I thought कि इनको तो मैंने ज़रूर बुलाना है. And luckily you were amongst that list, so I'm very happy कि आप जो है वो मेरे साथ हैं. So my first question to you is, if I take you back 15 years down the line, so where were you, what were you doing, and aspirations क्या थी आपकी? I think 15 years back I was studying for my graduate degree, bachelor's degree. उस वक्त मैं graduate नहीं हुआ था and I was studying computer/telecom engineering और एक बहुत ही टेक्निकल डिग्री थी. उस वक्त पूछा आप 15 साल पहले कि मैं एक एज ए लीडर एज ए CEO कहीं बैठा हूँगा, तो नहीं, ऐसा कोई थॉट नहीं था. थॉट ये था कि बस डिग्री लेनी है और कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी. जिस तरह आप देखते थे अपने सीनियर्स को या कहीं बाहर पढ़ने चले जाएंगे एंड लाइक this will keep going on. So yeah, honestly speaking, I never thought that I'll be an entrepreneur. I never thought 15 years back कि मैं creative या advertisement field के अंदर काम कर रहा हूँगा. 15 years back I had no idea कि मैं जितना भी अभी पिछले 7-8 साल 10 साल काम करके आया हूँ उसका बिल्कुल कोई रुझान नहीं था. It was pure coincidence. Because of some reasons I realized my own potential. And to answer your question, I had no clue 15 years back how life would be, and alhamdulillah it turned out to be like amazing so far. Amazing, lovely. And can you share initial days journey of Keys Production? How did you start this? So basically Keys Production was a pure experiment. Like business का बिल्कुल कोई idea नहीं था और business का बिल्कुल कोई खोलने का ऐसा नीयत भी नहीं था, because obviously I had no investments, no backing. When I was about to graduate, I lost my father, so obviously the family condition and the financial situation was very different at that time. थोड़ा सा struggle भी किया और I think वो struggle थोड़ा ज़रूरी भी था. उसने बहुत ज़्यादा rigid कर दिया, flexible कर दिया. उस time के ऊपर there was no इरादा कि मैं business करूँ. मैं एक और agency में काम करता था, मैंने कुछ साल वहाँ पे काम किया, experience लिया. Like I got to know the industry better. The good part was the kind of agency I worked at that time gave me a lot of exposure. We did international events, worked with a lot of talent, a lot of big clients. So मुझे exposure थोड़ा मज़े का मिला था कि, and then I was like कि I needed some creative freedom. I wanted to do things on my own. कुछ मेरे last agency के अंदर creative fights बहुत ज़्यादा होती थी. मैं चीज़ों को थोड़ा सा differently करना चाहता था. Like let's say I worked on a couple of Lux Style Awards. So मैं चाहता था कि why don't we make them a very Pakistani Lux Style Awards. मुझे ऐसा लगता था कि हम बहुत confused हैं अपने खुद के content को लेके. हम बस copy किए जा रहे हैं for no reasons, but हम अपना कुछ original create नहीं कर रहे हैं. Keys Production जो है initial period के अंदर बहुत ज़्यादा struggle किया. ऑफिस में सफाई करने से लेकर और I literally started alone and उस वक्त बिल्कुल पैसे नहीं थे. इतने पैसे नहीं थे कि मैं कुछ बड़ी बड़ी हायरिंग्स कर सकूँ. ऑफिस ले लिया था, ऑफिस बनवा लिया था, कुछ इक्विपमेंट्स लिए थे. अंदाज़ा नहीं था कि उसमें ही सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे. जितनी सेविंग्स थी वो उसमें लग गई थी. एंड देन आई रियलाइज कि oh shit, you need to have money in your account to run your business as well. But slowly and gradually start किया, अकेले start किया. There were a lot of good clients who really had trust in me और कुछ हमें chances भी दिए and some good reputable client. तो वो एक सिलसिला चला step by step. शुरू के 6-8 महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था. फिर उसके बाद चीज़ें जो हैं वो सही डायरेक्शन में आना शुरू हुई. वी स्टार्टेड डूइंग हायरिंग्स. फिर एक ऑफिस से 2 ऑफिस, 2 से 3 ऑफिस, फिर एक एम्प्लॉई से 2 एम्प्लॉइज़. नाउ माशाल्लाह वी हैव अ टीम ऑफ 40 people in 3 different cities. Alhamdulillah. But journey has been amazing. I enjoyed it a lot. I think it was very important कि वो आप स्ट्रगल से गुजरें तो आपको आपकी अचीवमेंट्स के लिए आप अपना ग्रैटिट्यूड भी शो कर सकें. और अगर आपको सब कुछ एकदम से मिल जाए आसानी से तो कभी कभी आप फिर नाशुक्री भी करने लग जाते हैं. हसन, इस पे से मुझे ये बताएगा, यूजुअली जो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं आइडियाज़ लेकर बैठे होते हैं एंड सम या दे आर फियरफुल या कुछ और फैक्टर्स होते हैं, या अनएबल टू टेक दैट फर्स्ट लीप या स्टार्ट नहीं कर पाते. व्हाट वर योर की मोटिवेटर्स दैट पुश्ड यू कि भाई शुरू करना है? So
So I think I'm gonna give some credit to my mother here. She has been a fighter. Like when my father died, belonging to a Sindhi family, तो चीज़ें थोड़ी सी different थी और झगड़े लड़ाइयाँ and this and that and blah blah blah. अम्मा जो हैं वो उठ खड़ी हुई और उन्होंने सबको support किया. I think she was the one who gave me a lot of force and a lot of motivation. उससे एक चीज़ हुई कि एक आदत बन गई कि यार बस लग के चीज़ें करते रहनी है. कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, इनिशिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट. आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा. अगर मैं लिटरली ये सोचता हूँ कि एट द टाइम व्हेन आई वाज स्टार्टिंग पीस प्रोडक्शन आई डिडंट हैड मच मनी, आई डिडंट हैड एनी फैंसी इन्वेस्टमेंट. हाँ, एक चीज़ की थी कि आई डिसाइडेड कि यू नो गोना टेक एनी इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड, जो भी करेंगे खुद करेंगे. उस वक्त के अगर मैं नंबर्स देखूँ तो आई थिंक खुद को भी यकीन नहीं होता कि यार वहाँ से स्टार्ट किया था. तो ऑब्वियसली इफ़ आई गिव एन एडवाइस टू द अप एंड कमिंग जनरेशन कि यार बस लग जाओ, लाइक लिटरली कूद जाओ, लग जाओ. कहीं ना कहीं बेड़ा पार हो जाएगा. और यू हैव टू टेक अ जंप, यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. यू कीप ऑन वेटिंग फॉर द आइडियल सिचुएशन कभी नहीं आएगी. I can relate to this because 2 years back when I started my training company, so people used to come and ask me, "Keji, what's your strategy?" So I said, "मेरी strategy है 3 महीने शारा फैसल." So they said, "What's this?" मैंने कहा जी strategy है हर रोज़ शारा फैसल जाऊँगा, 3-4 क्लाइंट से मिलूँगा and that's it. और जिस दिन मैं शारा फैसल पे नहीं गया इसका मतलब है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. And it helped. So in that case वो जो initial hustling का period होता है that you miss now when you are established, चीज़ें चल पड़ी हैं. To be honest, like after COVID and the financial situation, that hustle has come back as well. अभी दोबारा से मैं clients के पास जा रहा होता हूँ. शारा फैसल के भी चक्कर लग रहे होते हैं. कुछ हमारे clients वहाँ पर भी हैं. But I think मैं कहता हूँ कि एक nature का एक निज़ाम है. So let's say if there is a tree, आप tree को chop करते हैं to make it look better, तो फिर वहाँ से दोबारा ग्रो करना स्टार्ट करता है. सो अगर आप उसको बिल्कुल छोड़ देंगे तो वो एक नॉर्मल शेप इख्तियार कर जाएगा, वो एक ब्यूटीफुल गार्डन नहीं लगेगा. आई थिंक लाइफ के अंदर भी ना मुझे ऐसा लगता है इंसान एक ऐसी चीज़ है कि उसको कांस्टेंट रिमाइंडर्स की ज़रूरत है कि इफ़ यू कीप ऑन रनिंग इन द स्ट्रेट लाइन. आई गिव एन एग्जांपल. फ्यू मंथ्स बैक आई वाज समवेयर इन डेनमार्क. आई वाज जस्ट रोड ट्रिपिंग विद अ फ्रेंड. वी हैड अ वेरी नाइस कार. हमने एक रेंटल कार लिया हुआ था. जो है पूरा एक ट्रिप कर रहे थे अराउंड डेनमार्क. 3-4 टाइम्स हाईवे पे गाड़ी चलाते चलाते नींद आ गई हम दोनों को. लाइक लिटरली आंखें नहीं खुली जा रही बिकॉज वो रोड इतना साफ है, ट्रैफिक इतना क्लीन है, कोई हॉन्क नहीं कर रहा है, कोई आगे पीछे से गुजर नहीं रहा है, तो इतने सुकून में आपको नींद आ जाए. एंड आई वाज लाइक, ही वाज इंडियन, आई वाज पाकिस्तानी. आई वाज लाइक वी आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ ट्रैफिक. तो हमारे यहाँ तो जब तक टीटा पीपा कोई साइड ना मारे, कोई कट ना मार दे, कोई गालियाँ ना दे रहा हो. सो अगर मैं इसको रिलेट करूँ लाइफ जर्नी से भी, सो इफ़ यू आर जस्ट गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी हर्डल्स, without any you can say problems, without any challenges, I feel like you might sleep on your journey. Wow. So there are few things which are really important to keep you awake of your surroundings and the way situations change. जैसे बहुत सारे लोग मैं भी देखता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत बुरा भला बोल होते हैं यार, बट मैं उनसे ये कहता हूँ कि यार थोड़ी रिसर्च करें, बाहर तो इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं. इन्फ्लेशन ने इतना ज़्यादा हमें हिट नहीं किया है जितना आप जो है वेस्ट के अंदर जाके देखेंगे कि लोग जर्मनी में कितनी हुकूमत को ज़्यादा गालियाँ दे रहे हैं जितनी हम यहाँ गालियाँ दे रहे होते हैं. सो येस, challenges I would say are equally important to have a good journey ahead. Wow, amazing. And Hasan, how is the keys production now? How would you define it? What are the projects that are you doing? How big, how small is that your company in the industry? So basically I got a chance to be in the student council back in my university. उसके साथ साथ like the opportunities that I got at a very young age, थोड़ा सा मुझे कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला. आई वाज वेरी एक्टिव शुरू से ही. जहाँ से मुझे चांस मिलता था मैं वॉल्टियर्स भी बना हूँ, मैंने इंटर्नशिप्स भी किए हैं. मैंने लिटरली व्हेन आई वाज इन कॉलेज मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपो सेंटर में जाके कोई एग्जीबिशन लगा था. आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट अर्निंग. 2000 रुपये मिले थे, 3 दिन वॉल्टियर किया था. गेस्ट रिलेशन ऑफिसर बने थे और बस जेडी ये था कि बस सूट पहन के जाना है और गेस्ट रिलेशन करना है आपने. आपको 2000 उस ज़माने में 2000 रुपये वाज लाइक आज के कोई 50,000 रुपये के बराबर होंगे या 30,000 रुपये के बराबर होंगे. एंड while being a student that was a big thing for me. इसी तरीके से I got some international opportunities as well. I worked with
some of my MTV friends, कुछ international concerts पे काम किया, कुछ international shoots पे काम किया, कुछ exposure ऐसा मिला कि I wanted कि हमें पाकिस्तान में event industry has to grow on those standards. I feel like कि हम अभी भी खैर बहुत ज़्यादा पीछे हैं, but at the same time हमने पिछले 10-15 साल में बहुत grow भी किया है in a positive direction. कुछ चीज़ ऐसी थी जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, बट नाउ एक इकोसिस्टम बन रहा है. कीज़ को मैं इस तरीके से कहूँगा कि कीज़ हैज़ ऑलवेज बीन वेरी कीन अबाउट हाई एंड कस्टमाइज कॉर्पोरेट इवेंट्स और प्रोडक्ट लॉन्चेस और क्रिएटिंग इवेंट्स एंड क्रिएटिंग कंटेंट थ्रू इवेंट्स which is world class, which is high class, and we always try for that. जितना हमें क्रिएटिव फ्रीडम मिल पाता है, जितने हमें बजट्स मिल पाते हैं, हम उसमें भरपूर कोशिश करते हैं कि अच्छे से काम करें. And sorry if I'm not sure if I've answered the question correctly. I know कि सारे प्रोजेक्ट्स बहुत करीब होते हैं when you work like with your heart and soul. कोई ऐसा प्रोजेक्ट that you are proud of कि यार ये जो हमने pull off किया था ना, I'm like proud of that. So as I said, like my mother has been a very big social worker. It comes from her as well. I've been very consistent. East Productions has been very consistent on working on social impact projects as well. So it's not like we only work on commercial projects. हम बहुत सारे social impact projects पे काम कर रहे हैं. To name a few, जो एक दो campaign जो बहुत ज़्यादा close हैं मेरे दिल से. We did something for Pink Ribbon Foundation, and it was their very first activation in Pakistan. बिल्कुल शुरू में पिंक रिबन स्टार्ट हुआ था, एंड उस वक्त वी वर वर्किंग विद अ टेक्सटाइल कंपनी, एंड दैट टेक्सटाइल कंपनी टोल्ड अस कि हम इस इदारे को सपोर्ट करना चाहते हैं, कैन यू कम अप विद अ प्लान, हम क्या करें. तो वी सॉ, वी डिड सम रिसर्च, और फिर हम एक प्लान बनाया कि हम कायदे आज़म के मज़ार को पिंक कलर में लिट करेंगे, बिकॉज वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे वाशिंगटन में, पेरिस में वो वाइट हाउस को पिंक लिट करते हैं, आईफिल टावर को पिंक लिट करते हैं, in order to show solidarity to the cause and create awareness. Right. So that was one project. It took us a month or two to take all the permissions. Right. And उस पूरे project पे हमारा खर्चा कोई 2-2.5 लाख रुपए हुआ था, but जो उसका PR ROI निकल के आया था, that was more than 300 crores. Wow. Because we got coverages from all the news channels in Pakistan, all the newspapers in Pakistan. We got coverages from 3 different BBC channels, CNN, Khaleej Times, Gulf News, and the word spread like fire. अब बहुत खुशी होती है पिंक रिबन को देख के कि अब वो PSL में भी काम कर रहे हैं, वो स्टेट बैंक के साथ भी काम कर रहे हैं. सो खुशी होती है कि हमने इनका पहला कैंपेन इतना अच्छा किया था, एक उनको फर्स्ट बूस्ट मिला था. एंड सिमिलरली वी डिड अ साइंस फेस्टिवल इन लाड़काना, and I went to Larkana for the first time, and we did a science festival for Alif Elan, which is a not-for-profit company. They hired us. Actually हम उससे पहले मैग्निफिसाइंस के साथ और दाऊद फाउंडेशन के साथ हमने कुछ काम किया था. They saw that work. They said कि आप हमारे साथ काम कर सकते हैं. So we took it just like any other project. We went there और हमने एक साइंस फेस्टिवल वहाँ करा कि हाँ ये था कि हमने उस पूरे लाड़काना आर्ट्स काउंसिल को ट्रांसफॉर्म कर दिया कि वहाँ के लोग ही नहीं पहचान रहे थे कि ये आपने किया क्या. हम लिटरली, हालांकि बहुत सारे वेन्यू की सफाई या प्लॉट की सफाई या उसको रंग कराना हमारा काम नहीं है, बिकॉज वी वर्क एट द वेन्यूज़ जो कि ऑलरेडी वेल सेटल हैं. हम एक्सपो सेंटर्स में या होटल्स में या हेरिटेज साइट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं. वहाँ पे हमने लिटरली झाड़ियाँ साफ़ कराई, वहाँ फ्यूमिगेशंस कराए वहाँ पे, और हमने चीज़ों को क्लीन करवाया फॉर द होल वीक. उस इवेंट पे I saw on the day one that a lot of students from government schools, they didn't had anything in their feet. तो इनके पैर में जूता चप्पल नहीं थी, और उनके हाथ में एक साइंस प्रोजेक्ट था. सो दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी कि यार एक लाड़काना जैसे शहर में और उसके सबर्ब्स के कुछ और स्कूल्स थे, और वहाँ पे बच्चे मज़े के साइंस प्रोजेक्ट्स लेके आए हुए थे. दैट वीडियो इज स्टिल ऑन आवर वेबसाइट एंड ऑन आवर यूट्यूब चैनल एवरीवेयर. कीप इट वेरी क्लोज टू अस. दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर शो रील एज वेल कि हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया था कि वो उन बच्चों के लिए ऐसा था कि ईद का दिन है, आई स्टेड देयर. हालांकि मेरा प्लान ये था कि मैं डे 1 पे वापस कराची आ जाऊँगा. इट वाज अ 3-day फेस्टिवल. आई स्टेड ऑल 3 days. क्लोजिंग सेरेमनी तक, एंड आई मेट अ लॉट ऑफ किड्स. इनफैक्ट किसी एक बच्चे के पेरेंट ने हमें घर पे खाने पे भी बुलाया, और जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा आपने इवेंट, लाइक हमने कहा हम तो हर हफ्ते इस तरह का कुछ कर रहे होते हैं, बट दैट वाज समथिंग लाइक really special. उसके अलावा भी लाइक देयर हैव बीन मोमेंट्स. वी वर्कड ऑन कोक स्टूडियो, हैव बीन really amazing. Got a chance to work with some of the
लेजेंड्स लाइक जैसे स्ट्रिंग्स के साथ हमने काम किया तो Wow. फैसल भाई बिलाल भाई लाइक ऑब्वियसली इनको एज लेजेंड्स देखा था हमने बट उनके साथ काम करने का मौका मिला दैट वाज समथिंग रियली गुड और उसके अलावा भी वी वर्कड ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बट ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि क्लोज हैं और रहेंगे इंशाल्लाह Wow, in future as amazing. well. And Hassan, how's your life besides your work? बाकी का जो टाइम है उस पे आप किन कॉलेज पे काम कर रहे हैं या कहाँ पे आपका टाइम है? I think being an entrepreneur, you work 9 to 9. I would say there are pros and cons attached to it. Right. कभी ऐसा है कि कभी वेकेशन लेना होता है या कहीं बाहर भागना होता है तो मैं 1 महीने के लिए भी कहीं भाग जाता हूँ Right. 20 दिन के लिए 15 दिन के लिए. The good part is I don't have to take permission from anyone. मुझे leave apply नहीं करनी. But at the same time मैंने बहुत सारे ख़ानदान की शादियाँ और दावतें बर्थडेज अपने भांजे भतीजों की अभी तक ऐसा होता है कि लाइक इवन आई मिस माई ओन मदर्स बर्थडे एट टाइम्स बिकॉज यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज जो क्लाइंट आपको पे कर रहा है और बेसिकली जिस तरह के हम प्रोजेक्ट्स करते हैं उसमें स्टेक्स बहुत इन्वॉल्व लेट्स से हम एक इवेंट कर रहे हैं जिसके अंदर पूरी सेल्स टीम इन्वॉल्व है पूरी मार्केटिंग टीम इन्वॉल्व है आउटसाइडर डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व हैं और इन्फ्लुएंसर्स इन्वॉल्व हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व किसी एक इंडिविजुअल के बस में होना ही नहीं चाहिए कि उसके किसी भी एक्ट से किसी को इम्पैक्ट सो आई डोंट हैव अ लेवरेज कि मैं अपना किसी भी किस्म का कोई पर्सनल एक्सक्यूज सामने ला सकूँ फ्री टाइम मिलता है अक्सर वीकेंड्स फ्री मिलते हैं सो या वी डू फन आई लव ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड सो जब भी मौका मिलता है मैं कहीं ना कहीं भाग जाता हूँ एवरी ईयर आई ट्राई टू एक्सप्लोर 1 or 2 न्यू कंट्रीज दैट हैज़ बीन द ट्रेंड फॉर लास्ट 10-12 years and so far it is on now. Lovely, lovely. One more thing that I love to ask is one misfit project or you can say one failure. कभी कभी होता है ना कि हम बहुत अच्छी कोई प्लानिंग लेकर कोई आइडिया लेकर आते हैं बट समटाइम्स इट डिडंट वर्क सो कभी ऐसा हुआ दैट यू प्लान फॉर समथिंग लाइक अमेजिंग बट इट डिडंट वर्क आउट I think there have been few projects which are still in our shelves which we thought के पाकिस्तान में अच्छे वर्कआउट करेंगे so we have a couple of partner agencies हमारी एक partner agency दुबई में है हमारी एक partner agency बाकू के अंदर है and we wanted to bring some of the international events to Pakistan we didn't realize हमें ऐसा लगता था कि नहीं यार पाकिस्तान में चलेगी ये चीज़ but obviously we didn't do much research before it I'll give you an example we wanted to bring a coffee competition in Pakistan we didn't realize that no brand would be interested here कॉफ़ी का रुझान अभी भी उतना नहीं है जितना बाहर है उसके ऊपर हमने रिसर्च पे और ट्रैवलिंग पे अच्छा खासा पैसा लगाया एंड देन later on the idea got shelved maybe we might do it later on maybe next year but so far yes it's on the shelf इसके अलावा भी like there have been a lot of projects which we have been trying to bring to Pakistan पिछले 1-2 साल से obviously the financial condition is as such like कुछ हमारे projects shelf पड़े हैं because the dollar has gone way up कुछ projects हमने लॉक किए थे when dollar was 150-160 and वो contracts हुए with the clients के साथ अब dollar जो है वो 300 touch कर रहा है obviously it is impossible for our clients as well to spend double the money to do the same thing which is not viable for them so yes कुछ इस तरह के misfits रहे हैं lessons मिले लेकिन I feel like कि हमारी फील्ड ऐसी है और मेरा तो खैर mindset ऐसा है it's like let's keep having failures let's keep trying let's keep doing experiments because उसी के अंदर से आपको सक्सेस भी उसी के अंदर से मिलेगा And Hasan, now because you are leading a team of more than 40 people, you are working with so many, even your vendors, partners. इस पूरी leadership की journey में, what has been your biggest leadership lesson? I think I still try to learn a lot. I would say, there have been a lot of moments where I kept. So we keep a very family environment at our office. हमारे office में हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी किस्म की जो है वो typical SOPs को introduce ना कराया जाए but at the same time there have been a lot of people who have taken my niceness and leniency for granted अभी भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मुझे आके ये लेक्चर करते हैं कि आप अच्छे से बात ना करें you know like मुझे ऐसा होता है कि कभी मुझे कोई आके बोले कि यार आप अच्छे से बात करें आपने इससे अच्छे से बात नहीं की और उल्टा होता है कि a lot of people come to me in my office like 4 team members हैं कुछ सीनियर टीम मेंबर्स हैं मुझे ये समझा रहे होते हैं अक्सर कि प्लीज़ आप इतना प्यार ना दें प्लीज़ आप इतने अच्छे से बात ना करें और उसका फिर ये होता है बाद में अक्सर ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग आए
और सीखे, ट्रेनिंग ली और भाग गए, this and that. Obviously, we can't stop anyone and we keep the ecosystem alive. We take pride in it as well. Okay, okay, we are serving as one of the academy as well in this industry in Pakistan, because there's no formal education around events. Like, there's no institute in Pakistan. There are few diplomas, but not up to the mark. So we take pride in acting as an industry as well. That we have trained more than at least 500 good talents in Pakistan जो कि different companies में काम कर रहे हैं, and we take pride कि वो Keys Production से trained होके निकले हैं. उनका crash course जो है वो Keys Production से हुआ था कि, and I'm happy कि वो इस काबिल हैं कि अच्छे और अच्छे पे स्केल पे और बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं या ब्रांड साइड पे चले गए हैं XYZ. So I think I cannot have any fixed answer to this question. I would say I'm still learning. There have been few very good moments. I still happen like कभी कोई पुराना बच्चा टकराता है और बहुत अच्छे से इज्जत दे के बात करता है तो उस दिन बड़ा इमोशनल फील होता है कि यार आपने किसी लाइफ में किसी का पार्ट प्ले किया. I was very keen on education. There have been a lot of cases at Keys Production where people came in कि यार वो मैंने मैट्रिक फेल कर दिया था, या अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे ऑपरेशंस एक्सपर्ट्स हैं, अच्छे आर्ट डायरेक्टर्स हैं, बट फॉर्मल एजुकेशन से दूर थे. तो जितना भी मुझे मौका मिला अपने ऑफिस के बच्चों के साथ, सो आई ट्राई टू हेल्प देम अ लॉट कि जितना भी मैं कर पाया कि आप मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दो, आप BCom करो, आप अपनी डिग्री पूरी करो, आप अपने सप्ली दोबारा से दो, बट हैव फ्यू डॉक्यूमेंट्स इन यू नेवर नो हाउ लाइफ फोल्ड्स आउट इन फ्यूचर, बट आपके पास थोड़े थोड़े बैकअप्स होने चाहिए. सो उसमें हमने काफ़ी रोल प्ले किया है एजुकेशन के अंदर कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकें. There have been a lot of students who have worked at Keys Production. Still there are few kids who work with us full time, but they're students as well. वो हफ्ते में 1 या 2 दिन अपनी क्लासेस लेने जाते हैं, एग्ज़ाम में छुट्टी भी लेते हैं, but we try to manage it with them क्योंकि वो हमें अच्छा पैशन भी देते हैं बदले में. So ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने ऑन रखी हुई हैं. एजुकेशन, सेल्फ इस्टीम इज़ समथिंग हमारे ऑफिस में चीखने का और किसी भी किस्म की फाउल लैंग्वेज यूज़ करने का या किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने का कोई रूल नहीं है. इवन इफ somebody makes a biggest blunder of their lives तो उनसे अकेले में बात की जाती है, and we make sure that एक ऑफिस एनवायरनमेंट अच्छे से बरकरार है. सो उसमें प्यार भी मिलता है बहुत ज़्यादा और कभी कभार कुछ सरप्राइजेस भी मिलते हैं, बट आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ. मैं अक्सर यही बोलता हूँ कि यार जैसा है वैसे ही चलते रहेंगे. सो ट्रू. इन हसन अगर देखा जाए तो जो हमारे करंट लीडरशिप लॉट है, दे आर एक्स जनरेशन. 40 इज़ द एवरेज एज ग्रुप जिसमें हमारे पास लोग हैं. बट जो अब जनरेशन हमारे पास आ रही है, मिलेनियल्स तो ऑलरेडी पार्ट हैं, जेन जी पार्ट है, इवन जेन अल्फ़ा जो कि ग्लास जनरेशन जिनको हम कहते हैं, वो तो ऑलरेडी जो है वो अभी वर्क प्लेस पे आना शुरू हो जाएंगे. सो हाउ डू यू सी दिस जनरेशनल गैप एंड व्हाट आर योर पर्सनल प्लान फॉर दैट एज वेल, कि हम जो नई जनरेशन आ रही हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? I feel like I went through this experience personally as well in my own office, like through interns, through very young people coming in, and एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि किसी बच्चे ने इंटरव्यू में डेट ऑफ बर्थ बताया ना, लाइक होली शिट हम तो बहुत छोटे हो भाई, 15-20 साल का डिफरेंस है. और एंड आई फील लाइक यार मैं बुढ़ा हो रहा हूँ. हालांकि आई एम नॉट दैट ओल्ड, आई एम जस्ट 33-34. बट जब आप लोगों की एज देखते हैं कि यार यू वर बोर्न इन 2002 मैं उस पर यूनिवर्सिटी ढूंढ रहा था तो मेरी कंपनी में काम करने आए हो या आई हो, तो एक एकदम से फील होता है आपको कि, बट आई फील लाइक कि things will always remain the same. पैकेजिंग डिफरेंट है. देखिए हम सब प्रोडक्ट्स एक ही हैं, पैकेजिंग का डिफरेंस है. पुराने ज़माने में ये था लाइक, सो इफ़ यू टॉक अबाउट जनरेशन अबव अस, जो हमारे बाप दादा थे, थोड़ा सा लेट बैक रूटीन था. हम ये तब बात कर रहे हैं जब शायद मैंने अपने अब्बू को देखा बचपन में, लाइक वो ऑफिस से घर कैलूला करने भी आ जाते थे, यू नो, लाइक लंच करके 2 घंटे घर आ गए, फिर ऑफिस चले गए. बट आज के टाइम पे लाइक मैं अपने ऑफिस से 3 या 4 मिनट की ड्राइव पे रहता हूँ, तो कोई 6 महीने में एक दफ़ा ऐसा होता है मैं घर लंच करने जा पाता हूँ. बिकॉज यू नो लाइक आई कैन नॉट स्पेंड 5 मिनट्स ड्राइव जाना, 5 मिनट्स आना, 20 मिनट बैठना. एज लाइक इस आधे घंटे में मैं ऑफिस में कुछ और कर सकता हूँ, एक और मीटिंग निपटा सकता हूँ. आई थिंक ये जो चेंज है ये और ज़्यादा, the routines are going to be much faster with this generation because they cannot wait.
इन्होंने डायल अप का ज़माना नहीं देखा है, इन्होंने डायरेक्ट 4G देखा है, इन्होंने जो है बहुत सारे रूटीन्स वो नहीं, so their patience level is different, so that is going to impact on their productivity as well. They want to do things much faster, they're not going to wait, they're not going to wait for any meeting. मैंने अपने स्ट्रगलिंग टाइम में 2-2 घंटा 3-3 घंटा भी किसी क्लाइंट के दफ्तर में वेट किया है, यू नो, बिकॉज काम लेना है। वो अभी जो है वो बॉस का वेट नहीं करते 5 मिनट, यू नो, मैं बोर्ड रूम में 4 मिनट लेट हो जाऊँ, मैसेज आता है कि बॉस वी आर वेटिंग इन द बोर्ड रूम। सो आई फील लाइक कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनकी इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ किया जाए, उनको और डिसीजन मेकिंग में डाला जाए, उनको और उनकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस की जाए, rather than just pulling out the things they're doing wrong. Yes, they are looking for shortcuts. Yes, they want success overnight, but what's bad in that? Let them do it. Let them prove themselves. मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई अच्छा है और अच्छा काम कर सकता है तो उसको भरपूर चांस दें. There's no need for a generational comparison, I would say, because things are very different. हमने जो है बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट देखी हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट देखी हैं, सो ऑब्वियसली वो उनकी हर रूटीन के ऊपर इम्पैक्ट करेगी. They're gonna have a much faster life, they're gonna have much faster achievements. हमने वो टाइम देखा है कि जब हमने 25 साल बाद सोचा यार अच्छा क्या करना है, घर से निकलने की इजाज़त मिली, यू नो, आपको पहले तो घर से गाड़ी की चाबी भी नहीं मिलती थी, सो ज़माने बहुत डिफरेंट थे, अभी जो है ज़माना बहुत डिफरेंट है. सो आई फील लाइक these guys have much more potential, I would say, and I don't mind saying this, and in fact I would feel proud saying कि ये generation हमसे बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, जाना भी चाहिए उनको, and we should all support them as well in whatever way possible, be it हमारे आसपास मोहल्ले के लोग, siblings, हमारे extended families, भांजे भतीजे, और जो लोग हमारे वर्क प्लेसेस पे काम करने आते हैं, यंग लोग, और अच्छे भी हैं. आई फील लाइक कि उनको थोड़ा उनके तरीके से हैंडल किया जाए. You know, they're very different. They don't follow the rules. Their creativity is very different, and I think if we handle them in their own way, I feel like हम सबको इस जनरेशन को थोड़ा अच्छे से प्यार करना चाहिए, and definitely they can do wonders, because उनके आगे बैरियर्स नहीं है. उन्होंने ना 20 साल घर पे बैठ के ये नहीं सुना कि अरे बेटा इसमें स्कोप नहीं है, अरे बेटा ये इससे क्या होगा, you know, they haven't, वो हमारे दिमागों में या हमसे एक पिछली जनरेशन में वो चीज़ें भरी हुई थी, so they don't have those things in their heads. So I feel like which is going to be a positive impact in the society in future. I really hope so. Even I would completely agree with you on this. Our son was like 7.5. So as you said कि pros and cons दोनों हैं. So pros is कि वो आके मुझे कहता है कि पापा यार चैट जीपीटी से ये तो पूछ के बताओ कि इस पे वो क्या सोचता है. बट अगर 2 मिनट इंटरनेट बंद हो, सो वो मेरे सर पे खड़ा होता है कि नेट क्यों नहीं चल रहा, आई नीड नेट राइट नाउ. और विन यूट्यूब की बफरिंग तो अब मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि या ओह माय गॉड, आई कैन रिकॉल माय डेज लाइक बैक इन 2005-6, और जिस तरह से हमें इंटरनेट मिला. I was reading study that kids born after 2010, 2010 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, they don't believe that there was a world without Google. They think Google is created by God. So they say, oh my God, we had a world without Google. How did you guys live it? Yeah. Even I remember हिमेश रेशमिया का दौर था, तो उसका एक सॉन्ग आया था तेरा सुरूर. It was like कोई अपनी ISP पे पड़ा हुआ था, 7 MB का सॉन्ग था. It took us like Hasan 45 minutes to download that. Oh my God. and now I can think of my son. अगर उसको ये मैं बताऊं कि बेटा 5 मिनट रुक जाओ फिर इंटरनेट चलेगा, he can't wait for that as well. Yeah, so the good thing is कि they are full of knowledge already, जो कि हमें शायद उस वक्त नहीं थी. So they are very tech savvy. बट डेफिनेटली उसके साथ जो उसके कौन थे उनको एज ए समवन जो कि इनके इनिशियल फेजेस को देख के आए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका साथ दें. यू आर वेरी राइट ऑन दिस. Hasan, one more question. What is like your leadership lesson या लाइफ लॉन्ग लेसन जो कि ज़िंदगी ने आपको सिखाए हैं that you hold very close to yourself? I think you gotta stick to your decisions. Sometimes problem तब आती है जब आप अपने ही decision को question करते हैं. So when you get into any kind of doubts, that's where the problem happens. One thing that I try to learn in my leadership journey or in my own career is that stick to your decision. एक decision लिया है, उसके ऊपर stick करें, उसके ऊपर firm रहें,
उसको बैक करें और अपने आप को भी बैक करें, बिकॉज इफ़ यू गेट इनटू डाउट्स तो फिर तो वो एक एंडलेस दुनिया है, एक यू गेट इनटू अ लिम्बो, एंड दैट इज़ वन थिंग दैट आई ऑलवेज ट्राई टू फॉलो अराउंड, दैट इफ आई टेक अ डिसीजन आई गेट वेरी फर्म अपॉन इट, और चाहे वो किसी भी किस्म का हो, चाहे उससे लॉस मिल रहा हो, चाहे उससे प्रॉफिट मिल रहा हो, and sticking to your decision is the most important thing that I follow in my leadership. And number two is that I also try to be flexible. Try to be very honest. The reason when you invited me and I come here, I was like, मैं दो चीज़ें कुछ सीख के जाऊँगा इस पॉडकास्ट से. You never know वो दो चीज़ें मुझे कहाँ काम आएंगी, मेरे दफ्तर में, मेरे घर में, या मेरी पर्सनल लाइफ में. And I'm always looking for opportunities to learn new things. चाहे वो जहाज़ में बराबर में कोई बैठा हो, या किसी वेटिंग रूम में कोई कहीं बैठा हो, या किसी बाहर कहीं कोई किसी ट्रेन या रेस्टोरेंट में कोई मिल जाए. सो learning from others is also very important for leaders as well. I see a lot of leaders who are very rigid and very like egoistic, and हमें सब आता है. So that is something good about me. I can brag कि I always say नहीं मुझे कुछ नहीं आता, मैं रोज सीख रहा होता हूँ बस, और उसी सीखते सीखते हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं. Love, amazing. And Hasan, where do you see Keys production in the next 5 to 10 years? Any exciting projects that you're working on? Yes, so we have brought in a couple of international chapters in Pakistan. We're working on a World Bank project. It's about period poverty in Pakistan, and create awareness about female hygiene issues, and how to make it normal in a country like Pakistan, because it causes a lot of diseases, a lot of myths, and have a lot of other consequences as well. There are a couple of other fun projects that we are bringing into Pakistan. We're working with some really good chefs around the world, some Michelin star chefs. We have a couple of good food company clients in Pakistan and in Dubai. So हम बहुत मज़े मज़े के chefs के साथ, drinks master के साथ, like food world में we're expanding a lot. And yes, the idea is when things get settled down in Pakistan just a little bit, to bring those things to Pakistan as well. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, बहुत से अच्छे बरिस्टास के साथ काम करते हैं जो कि कॉफ़ी आर्टिस्ट हैं. एज ए सेड मैं आपको कॉफ़ी शो का बता रहा था, वी वर ट्राइंग टू ब्रिंग इट इनटू पाकिस्तान. सो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं पाइपलाइन के अंदर. वी हैव सम, वी वर्किंग ऑन एन ऑटो शो एज वेल to bring that in Pakistan. It happens in Dubai and Abu Dhabi. We're working really hard to bring that to Pakistan. We're focusing on that at least कि कुछ मज़े की चीज़ें हों. और फ्यूचर में कीज प्रोडक्शन जो है वो we're trying to work towards some kids education and some kids fun elements. हमें ऐसा लगता है कि जितने भी पाकिस्तान में इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, सो वो एक सर्टन एज ग्रुप के लिए, एज ब्रैकेट के लिए हो रहे होते हैं. There's nothing happening for the kids. वो मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न करती है चीज़. So we're trying कि हम kids के लिए कुछ मज़े की चीज़ इंट्रोड्यूस कराएं, where it is very much viable for kids from age 1 to 10, 12. So they can have some fun as well. They can have some fun learnings as well. That is something in the pipeline, and inshallah you will get to know about it in real soon. Inshallah, I wish you all the best. When I got to know about Keys production, there was one project I always wanted to do. फिर जब मुझे आपके प्रोफाइल का पता लगा, कंपनी का पता लगा, एंड आई थॉट कि ये शायद वाहिद कंपनी है जिसके साथ मिलकर ये काम कर सकता हूँ. दैट वाज ऑन द लीडरशिप एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेवल, कि हम माउंटेन ड्यू टाइप कोई एडवेंचर बेस्ड, लर्निंग बेस्ड जो है वो लीडरशिप का प्रोग्राम डिज़ाइन करें. इस पॉडकास्ट के बाद डेफिनेटली मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. We have done a lot of such corporate meetings for a lot of clients where we have taken people to Hunza and Gilgit and Nathia Gali and Urban, जिसमें हम clients को लेके जाते हैं. 3 दिन 4 दिन के पूरे programs होते हैं, starting from their trainings and fun activities and educational material से लेकर product launch से लेकर पूरा एक 4 दिन का packaging होता है. We take them to different villages and we make them do different act. तो वो तो already हम कर ही रहे होते हैं, but उसको अगर और fine tune करके need to take it to the next level, why not? We'd love to do that. Lovely. One last question before I move to the rapid fire round. Someone who is in their like mid-20s जो कि अभी जिन्होंने करियर ज्वाइन किया है, जो कि अभी वर्क प्लेस का हिस्सा बन रहे हैं या बनने जा रहे हैं या MTO आके बने, कुछ एडवाइजेस जो आप उनको देना चाह रहे हैं? I would say stop worrying about the future. एक चीज़ जो है जो मैं खुद में भी फील करता हूँ कि जिस तरह के हमारे हालात चल रहे होते हैं मुल्की एंड फाइनेंशियली एंड दिस एंड दैट, लाइक दिन में 10 लोग आके बोल रहे हैं यार वो आप पाकिस्तान वापस क्यों आए ना, आप वापस चले जाएंगे कहाँ.
तो यार आप पाकिस्तान में कुछ रहा नहीं है, दिस एंड दैट। सो वो कॉन्स्टेंटली ना आपके दिमाग में वरीज घुस रही होती हैं बहुत ज़्यादा। फिर ऑन टॉप ऑफ इट लाइक थोड़ा सा एक कीड़ा ये भी है कि चीज़ों को सही भी करना है। तो लाइक मुझे तो कोई गलत पार्क किया हुआ नज़र आता है, मैं गाड़ी रोक के उसको भी बोल रहा होता प्लीज़ अपनी गाड़ी सही करिए करें, आपकी वजह से बाकियों को प्रॉब्लम हो रही है। सो आई फील लाइक के hurdles, fears would always be there. Live it day by day. जैसे मेरी एक आदत है, मैं वीक बाय वीक अपनी चीज़ें लेके चलता हूँ। एक छोटा सा एक रूटीन बनाया हुआ है कि पूरा वीक जो है हसलिंग करनी है, वीकेंड पे जो है थोड़ा रिलैक्सेशन करनी है, फैमिली टाइम या फ्रेंड्स टाइम गुजारना है। व्हेनेवर आई गेट अ वीकेंड, बहुत क्योंकि हमारे मोस्टली इवेंट्स वीकेंड्स पे हो रहे होते हैं, तो कभी कभी वीकेंड्स भी मारे जाते हैं हमारे। एंड देन संडे को जो है आई मेक अ चेकलिस्ट, क्या नेक्स्ट वीक क्या करना है। संडे को मैं मेरी तरफ से हमारे टीम के ग्रुप्स के ऊपर और ईमेल्स के ऊपर चीज़ें जाना शुरू हो जाती है संडे इवनिंग को। वो खुद को भी एक रिमाइंडर मिलता है कि सुबह मंडे है, और मैं वो दूसरों से के साथ भी शेयर कर रहा होता हूँ। समटाइम आई थिंक माई टीम वुड हेट मी फॉर दिस कि मैं संडे इवनिंग को उनको मंडे याद करा रहा हूँ, बट आई एम लाइक दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। आई वुड से दिस टू द यंगर जनरेशन, लाइक द 20s में, जो अर्ली 20s में जो लोग हैं जो ग्रेजुएट करने वाले हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं। एक पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूँ ये कि उनको सिर्फ इतना बोलूँगा कि अभी 20 साल के हैं, लाइफ 30 साल में या 35 साल में कैसी होगी उसको भी छोड़ दें। लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, ये जो फियर्स मेरे 10-12 साल पहले थे, व्हेन आई लॉस्ट माई डैड, ऐसा लगता था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, पता नहीं क्या होगा। मुझे ऐसा लगता था मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बकाया फ़ीस भी नहीं दे पाऊँगा, बिकॉज ही वॉज द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस एट दैट टाइम। बट हाउ लाइफ चेंज, मैं वहाँ से यहाँ तक कितना आगे आया। उस वक्त अगर मुझे कोई आके ही बता देता, लाइक मुझे ऐसा होता है अल्लाह मियाँ कोई मैसेज कर देते कि बेटा तुम 35 साल की 33 साल की उम्र में यहाँ पे बैठोगे, तो मैं तो बहुत चिल करता और बहुत ज़्यादा फन करता। वो जो टाइम मैंने वेस्ट किया वरीज में, शायद मैं ना करता। सो आई एम गोना से दिस टू द 20 years and the 18 years young boys and girls. Stop worrying that what you would be in your 30s and 40s. Stop worrying about it. Break down your life. वीक्स में ब्रेक करें, क्वार्टर्स में ब्रेक करें, ईयर्स में ब्रेक करें, डेकेड्स में ब्रेक करें, पूरी लाइफ एक साथ ना लेके चलें, बिकॉज यू डोंट नो, वी डोंट इवन नो हाउ मच मोर वी गोना लिव, लाइक हम कल हैं या नहीं हैं। तो ये मैंने कुछ अपने गोरे लोगों से, दोस्तों से और कुलीग से बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि यार 70 साल वाले भी वहाँ के इतने एंजॉय करते हैं जो हमारा 20 साल वाला नहीं कर रहा होता। एंड दैट्स वेयर यू गो लाइक यार यू डोंट नो हाउ मच मोर यू गोना लिव। स्टॉप वरिंग, रिलैक्स। वरी करने से कुछ नहीं होगा। There is a difference between hustling and worrying. There's a very thin fine line between it. If you're thinking that कि मैं सब बैठ के सोच रहा हूँ तो मैं serious हूँ, नहीं, you need to take action as well. जाएं, लोगों से मिलें, बात करें। There's so many mediums available now कि बहुत कुछ किया जा सकता है। Literally the world is going global, especially COVID के अंदर जितना globalization पाकिस्तान जैसे मुल्क में आया है, because Pakistan is a country. One interesting fact I'll share with you. We skip the trends. Pakistan does not go into transition. लैंडलाइन वेस्ट में 200 साल यूज़ हुआ, पाकिस्तान में 5 साल यूज़ हुआ था कि मोबाइल फ़ोन आ गया, तो हमने एक टेक्नोलॉजी स्किप कर दी। फैशन में हम अभी बहुत पीछे थे कि हमने डायरेक्ट जंप कर दिया फास्ट फैशन पे। नाउ आप कहीं भी जाएंगे, यू हैव सो मेनी लोकल ब्रांड्स प्रोड्यूसिंग फास्ट फैशन कि एकदम से अब आपके लिए कुछ भी पहनना ख़रीदना, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके पास डायल अप से आपने डायरेक्ट 4G पे जंप मारा, सो यू नेवर नो कि अब अगले ट्रेंड्स पे हम कहाँ जंप करेंगे। सो व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, हो सकता है कि जिस बारे में आप वरी कर रहे हैं वो ट्रेंड आपके मुल्क में रहे भी ना। यू नो, यू नेवर नो कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट एज वेल। सो यू नीड टू बी वरी फ्री, रिलैक्स्ड and just take things step by step. Lovely, amazing. Hasan, loved it. Now we are into the final round, which is like rapid fire. In the first round of this is this or that. Okay. So you have to pick only one. Alright. Are you up for this? I'll try my best. Okay. So number one, Bill Gates or Elon Musk? I would say Elon Musk. Okay. Vision or execution? Vision for sure. Okay. Innovation or efficiency? Efficiency. Okay. Short-term thinking or long-term thinking? Long term for sure. Results or process?
process. Data-driven decision making or intuition-based decision making? Data-driven. Anytime. Okay. Money or passion? Patience. Okay. Resilience or adaptability? I think I would say both are very close by, but I would say adaptability. Okay, good. And now this is like favorite round. Like you have to pick your favorites. Uh, your favorite way to de-stress? Music, traveling. Okay. What is your favorite social media platform? I like LinkedIn a lot. Okay, good. Your favorite company culture value? Like, I really like what Google does. Make their people worry free and sleep in the office, making pods. Like घर office को उन्होंने एक world बनाया हुआ है. I wish I want to do that in Pakistan for sure. Amazing. Your favorite interview question that you like to ask to any candidate? Which I would like to be asked, or I like to ask someone. You like to ask to someone. I always ask one question. I put their CV and I say, tell me something which is not mentioned in your CV. This I ask to every candidate I interview. I say, जिसमें नहीं लिखा वो बताएं. Lovely. Favorite way to celebrate success? I think gratitude first of all, Allah Taala का शुक्र, and something for family and the teams. So हम office में हमेशा celebrate करते हैं. Like any kind of gratitude, any kind of ritual जिसमें आप शुक्र अदा कर सकें. That I try. Right. And favorite thing about your work? I think it's everything about our work is it's not stagnant, it's not fixed. There are always new projects, there are always new clients. So मैं अगले महीने क्या कर रहा हूँगा, even I don't know right now. Right. Yeah, like अगले महीने का तो चले पता है, मैं अगले 3 महीने बाद क्या कर रहा हूँगा, I don't know. Right. That's the fun part about our work. कि अक्सर हमारे पास clients ऐसे आते हैं, कोई ऐसे projects आते हैं जो हमने पहले कभी नहीं किए होते, कोई ऐसे sector से आते हैं. But that's the fun part about us. Right. When we do research, brainstorming, so we call ourselves all-rounders and problem solvers. Right. So like literally, कभी हमारी design team से कोई operation का idea आता है, and सब लोग हैरान हो जाते हैं. या कभी हमारा finance वाला हमें कोई creative idea दे देता है. So we always discuss. And so we're all-rounders. We work in different directions, and that is one thing that always gives our employees a great learning curve as well. इनको बहुत कम time में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है. So we don't have this culture in our office कि जी आप ये करते हैं तो आप सिर्फ ये करेंगे. मतलब we don't force everyone, but you always have a choice to work in other departments as well. Right. Work in different directions as well. That is something I always like about these productions. Right. My workplace, that it never gets boring actually. Wow, amazing. A few more on this favorite round, and then we'll move to the last one. Sure. A favorite place to visit in Pakistan? I haven't been to some of the northern areas. कुछ ऊपर के कुछ जगहें हैं, like Popusar Top and Chilas वगैरह. I really want to go and visit those places. बाकी सब घूमा हुआ है पाकिस्तान. कुछ जगहें हैं like K2 base camp है. These are the places I really want to go. Oh, wow, amazing. Now we are into the last thing, which is like fill the sentence. Okay. I'll give you the sentence and you have to complete it. Okay. The biggest challenge facing leaders today is? Adaptability, I would say. Good. The best advice you ever received was? Just be yourself. Okay, good. In your free time, you like to? Read and listen to music. Okay, good. One thing I wish I could have known at the start of my career. Do not worry about the future, for sure. One advice that you would like to give to the event managers? Work your heart out. Don't worry about things. Keep experimenting. And never say कि ये हो नहीं सकता. Wow. Don't say that. Wow. A few more. Yeah. My motto in life is? To live and let live. Okay. Two more. The best way to show appreciation for your employees is? Be nice to them and be close to them. Treat them like family. Lovely. And the last one, to increase employee engagement, companies should engage more with the audience, do more fun activities. I feel like what I have observed, in fact, there are two learnings that I've gotten. Sometimes I feel like just giving people a raise. I feel like that situations are going different. Wow. Sometimes, like there was a time when if
appreciation was enough, or a thought was enough, or an act was enough. But right now, I feel like that employees are looking for more and more money. So what we try to do is like, let's say if I need to throw a party for some achievement, I would rather pay 10 people a bonus. That would make them more happy. So वो actually applications और packagings बदलती जा रही हैं appreciation की भी, because it's not fixed. मैं आपकी बहुत तारीफ करूँ सबके सामने, बट आजकल के ज़माने में मुझे ऐसा फील होता है if there have been a lot of cases in front of me that where I'm appreciating a lot and the other person is like, भाई मुझे पैसे चाहिए मुझे 1 घंटे की appreciation नहीं दो, मुझे 15,000 रुपए और दे दो. You know, like that has been a learning. I'm still learning this thing कि किस तरीके से balance create किया जाए. As I said कि आज मैं इस चीज़ को बुरा इसलिए नहीं कहूँगा कि the way situations are now, किसी एम्प्लॉई को 5-10 हज़ार रुपये भी मिलना होगा महीने के अंदर, that's you never know वो इसके लिए किस चीज़ में काम आ सकता है. Alhamdulillah, like life में if we are at a point where we are privileged now, doesn't mean that we stop thinking about others. So I would say appreciation has different forms. Some people are, कुछ लोगों के लिए enough है कि आप भरी महफिल में उनके अच्छे नाम से उनको पुकारें, it's enough for them. But कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जैसे वो कहते हैं ना कि like there are certain things you need in life and there are certain core values. मैं कहता हूँ core values में ना आप खाना ऐड करते हैं. If you're hungry, if you don't have money, then there are a lot of core values you're not gonna give a damn about. So again, we gotta include this thing in our conversations when we talk about employee appreciation, when we talk about creating a culture. But right now, that is the reason that हम देखते हैं कि बहुत सारा talent, अच्छा talent भी बहुत छोटे से डिफरेंस पे स्विच कर जाता है, बिकॉज यू नेवर नो उसकी क्या मजबूरी थी, उसके घर में क्या सिचुएशन थी. उसके लिए वो 20,000 बहुत हैं, आपके लिए नहीं होंगे शायद, बट उसके लिए वो एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन था. यू नेवर नो. So we need to keep these things in mind whenever we are. I'm trying to learn these things with time. COVID was a blessing in disguise where I got to learn a lot of new things as well. Previously, our culture was very different. In COVID, we started trying introducing different SOPs in our office and our different workplaces. So I feel like a person like me is still in the learning phase. If any of my advice wasn't like up to the mark, I apologize for that. Lovely. But I just try to follow my heart and mind. Oh my God, I must tell you, this was very inspirational. जो हमारी theme है, inspiring conversations, honestly speaking, ये उसके मयार पे पूरा उतर रही थी. And I'm sure कि जो viewers हैं, they'll get inspiration definitely. And जो insights आपने share किए हैं, amazing. So I thank you so much for being with us. It was such a pleasure having you. It was amazing being here. Thank you so much for calling me as well. And it was fun, yeah. I love the rapid fire round. Thank you. Thank you, Paul. Thank you.